Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on Kurukshetra monthly compilation, and I'll be discussing Kurukshetra for the month of June. For this month, the journal focuses upon rural tourism, which is again important for both prelims and mains examination. Even this type of article or related news will help you in the AC paper as well. So without any further delay, let's get started. And how we'll be going about the discussion. There we have segregated the paper into General Studies Paper 2 and General Studies Paper 3. So some of the important articles that I'll be discussing with you today is rural tourism, tourism for Atmanirbhar Bharat, northeastern India, tourism infrastructure development in General Studies Paper 3, reviving tourism post COVID-19 pandemic. And if you're new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, if you find this video informative and helpful for your examination, do not forget to press a like button. So I'll start a session with the all article that is relevant for General Studies Paper 2, and you can also note some folder point, although we'll be providing the PDF also. You can download it from our websites. You'll get the complete PDF. So rural tourism. So any form of tourism that showcases the rural life, art, culture and heritage at the rural location, and thereby benefiting the local community, which is socially and economically enable the interaction between the tourist and local for more enriching tourist experience, is termed as rural tourism. So if you're writing an essay specifically, you have to write the complete definition. Rural tourism is a multifaceted that entails agriculture tourism, cultural tourism, nature tourism, advent of ecotourism, and which is closely related and aligned to it. Now, tourism की अगर बात करें, it's a catalyst to economic growth. How it is helping, we'll see the detail. Tourism has become one of the most important economic sector in the countries, producing significant national income and creating high employment opportunities. Right? The tourism industry generate both direct and indirect employment. This is the fact and the advantages of the tourism in our country. The travel tourism industry is one of the fastest growing industry globally. Comparatively किसी और country के मुकाबले इंडिया की जो tourism industries है वो काफ़ी अच्छी grow कर रही है. The growth rate is around 3.5% vis-a-vis the global economic growth, which is 2.5% for 2019. Now, sector that contribute around this sector basically contribute 10.4% to the global GDP, generate 330 million employment worldwide, and account for 27.4% of the global service export. So these data is a global related data. It's not specific to India. So global level पे जो data है that you can also use in the mains paper as well as in the essay paper. In 2019, the sector accounted for 8.8% of the total employment, that is 5.8% of the total export and 6.9% of the GDP. So some factual data you have to note. If you're writing in mains paper, it is well and good. Now moving ahead, Swadesh Darshan scheme, government एक नई scheme और important scheme start की थी 2014 में. So it was integrated with the theme-based tourist circuit, and the scheme aims to promote, develop and harness the potential of tourism in our country. Now, under the Swadesh Darshan scheme, Ministry of Tourism has provided the central financial assistance, which is also known as CFA, to the state government, union territory administration for the infrastructure development of the circuit. Now, thematic circuits की अगर बात करें, under the Swadesh Darshan scheme, Ministry of Tourism is developing a thematic circuit in our country in a planned and prioritized manner. तो कौन-कौन से ऐसे thematic circuits develop किए गए हैं? These are some of the name, that is North East Circuit, Buddhist Circuit, Himalayan Circuit, Coastal Circuit, Krishna Circuit, Desert Circuit, Tribal Circuit, Ecotourism Circuit, Wildlife Circuit, Rural Circuit. These are all the circuits. Even Ramayana Circuit is included, Heritage Circuit, Sufi Circuit and Trinkkhatra Circuit. तो जो खास करके अगर आप कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में, so this type of thing can be important for your prelims. Now, other important grants or measures from the government. So the Ministry of Tourism has taken steps to promote tourism in a sustainable way. It has launched Swadesh Darshan and Prasad scheme to improve the tourism infrastructure in our country. And it also come up with a scheme called Adopt a Heritage,
जिसका टैगलाइन है अपनी धरोहर अपनी पहचान इज अ प्रोजेक्ट एम एट इम्प्रूविंग एंड मेंटेनिंग द विजिटर फैसिलिटीज एज हेरिटेज साइट मॉन्यूमेंट्स एंड अदर टूरिस्ट अट्रैक्शंस। तो कुछ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन की अगर बात करें, गवर्नमेंट ने ई वीज़ाज फॉर नेशनल टूरिस्ट ऑलमोस्ट 170 कंट्रीज़ को दिया है। उसमें कुछ कैटेगराइजेशन की गई है। सब कैटेगराइजेशन इज देयर विच इंक्लूड टूरिस्ट वीज़ा, ई बिजनेस वीज़ा, ई मेडिकल वीज़ा, ई medical attendant visas and e-conference visas. This is to ensure that Government of India is dedicated toward promoting the tourism in any best possible way out. Now, Iceland tourism की अगर बात करें, नीति आयोग has taken up a holistic development of few identified Iceland in our country. This include some of the major island in Andaman and Nicobar, namely Smith and Rose, Long Evis Island, 5 लक्षद्वीप के आइसलैंड है। दीज आर द नेम। अगेन स्वदेश दर्शन स्कीम के साथ इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि जो आइसलैंड टूरिज्म है उसको भी प्रमोट किया जा सके हमारे कंट्री में, राइट। नाउ इम्पॉर्टेंट टूरिज्म, बेसिकली व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म? इफ यू लुक इनटू द इम्पॉर्टेंस पार्ट, बेसिकली in most of the world, tourism is a significant source of economic growth. As I've told you, I've given you a data, it substantially contribute to the GDP. And tourism has potential to generate large-scale productivity, employment, multifaceted nature, ranging from high to semi-skilled. Presently, tourism has a commercial value that rival for exceed of oil export, food items, and automobiles. Now, tourism has a potential to be one of the essential participant in the international trade and one of the primary source for the income for many developing countries. Now, कुछ strategy है जो गवर्नमेंट ने बनाई हुई है. That strategy is called National Strategy and Roadmap for the Development of Rural Tourism. So these are some of the initiative under Atmanirbhar Bharat that focuses upon key pillars. First is model policing and best practices for tourism, digital technologies and platform for tourism, cluster developing for tourism, marketing support for rural tourism, capacity building for stakeholders, governance and institutional framework. Now, the national roadmap of the rural tourism development strive to prioritize the rural tourism at the national level. डिजिटल टेक्नोलॉजीज और जो प्लेटफॉर्म है उनकी भी बेसिकली यूटिलाइजेशंस को बढ़ाई गई है ताकि नई अपॉर्चुनिटीज़ मिले रूरल एंटरप्रेन्योर्स को, सो दैट इट कैन इम्प्रूव द मार्केट एक्सेस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. Now the other topic, or you can say other article, that is tourism for Atmanirbhar Bharat. So since the ancient time, we've seen India has been regarded as a paradise of tourism, and a vast geography of India provide an immense opportunity to develop and form tourism in our country. In recent time, India has been recognized as a niche area for tourism, and rural tourism being one of the part of them. According to the United Nations Tourism Organization, रूरल टूरिज्म की अगर बात करें, इट्स अ टाइप ऑफ एक्टिविटी इन विच जो विजिटर्स हैं दैट एक्सपीरियंस अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जनरली विच इज़ रिलेटेड टू नेचर बेस्ड एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर, रूरल लाइवलीहुड, कल्चर एंड साइट सीइंग. नाउ इंडिया एज अ हॉटस्पॉट फॉर द रूरल टूरिज्म. अगर इंडिया में रूरल इकोनॉमी की बात करें, इट्स अकाउंट फॉर 46% ऑफ इंडिया नेशनल इनकम and 68% of the total population of India, 64% of the total expenditure and 33% of the total saving. So this is again very, very important data. You can take a note of this. Now the vast expansion of rural economy and in the different geographical feature include deserts, mountain, plain, plateau, island, coast, 4 biodiversity hotspot, which is total 36 in the world, including the huge potential of rural tourism in our country. Besides that, India has a rich heritage of over 40 World Heritage Sites that are enough to attract the tourism from any part of the world. Now, boosting rural tourism, government ने क्या-क्या initiatives लिए हैं? So, Ministry of Tourism has launched various programs and they've taken several initiatives to encourage the rural tourism. First is Swadesh Darshan Scheme. उसके अलावा Product Infrastructure Development Destination and Circuit, which is known as PIDDC. Major Tourist Infrastructure Development Scheme by the Government of India. Rural Tourism Infrastructure Development component की अगर बात करें, it's a part of PIDDC, specifically focusing on development of rural tourism in our country. Now, the center has recently drafted the Draft National Strategy and Roadmap for Rural Tourism, which center on developing, promoting local products through tourism, which in turn result in generating the income and jobs in the rural areas.
Now challenges जो face की गई हैं by the rural tourism, we'll see some of the challenges also, because this is important to know what are the challenges. Rural market are often characterized by the rural population which is still poor to literate their urban counterpart. तो अगर disparity की बात करें तो है, वो अभी भी exist करती है. Absence of proper mode of surface transportation, lack of basic infrastructure, inadequate lodging, amusement facilities, inconsistent electricity, and telecom problem. So these are some of the major problems being faced by the rural tourism, specifically for the rural India. ना कुछ रिकमेंडेशंस दिए गए हैं रूरल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए. फर्स्ट इज कनेक्टिविटी. अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी तो टूरिज्म डेस्टिनेशन जो है वो एज अ टूरिज्म डेस्टिनेशन नहीं बन पाएगा और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे. देन द पीपल वुड बी नॉट रीचिंग आउट. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कनेक्टिविटी. उसके बाद उस जगह की एक एक्सटेंसिव एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत है ताकि लोगों को पता चले. थर्ड इज फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग एन एक्सपीरियंस फॉर टूरिस्ट इंटेंटेड बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स जहाँ पे होटल विच कैनॉट कनेक्ट टू द लोकल वाइब ऑफ द डेस्टिनेशंस. उसके अलावा देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर ट्रिपल पी, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ताकि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके. एंड इट शुड इनेबल फॉर बोथ डेवलपर्स एंड बूस्टिंग द टूरिज्म इन रूरल एरिया. For successful implementation of the rural project, the participations of the local village panchayat and local stakeholder is very much important. Now the other article, that is northeastern India. Northeastern is although a favorite topic for UPSC civil services examination. So we'll see what are the important points that you can take a note of. So the northeastern region of India is a paradise for tourists from across all over the world. The seven sister states is full of beautiful places and attract tourists throughout the year. In a particular noteworthy, the several popular tourist destinations of the region are primarily located on the rural setting, offering the visitor different kind of experience. तो अगर रूरल डेस्टिनेशंस की अगर बात करें नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, दे प्रोवाइड द ग्रेट रिलीफ टू द लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट. एंड फॉलोइंग आर द ब्रीफ इंट्रोडक्शंस about the popular tourist destination in the northeast. We'll see one by one. The first is Assam, Sokuchi, Hazo, Mayong, and Jindka. So these are the destinations. Sogachi and Hazo has been twin destination for about 20 kilometers from Guwahati, offering an ambience through visitors to carry home. Hazo is a village of 5 religion shrines, 4 Hindu temple, and a Sufi shrine. One of the major Hindu temple is the Buddhist pilgrimage. Another Hindu temple in Haji and Kedar is Kamaleshwar temple, which is at top of Mandachal hill, and Kameshwar temple at the Gorkhana hill. तो ये कुछ ऐसे लोकेशंस होंगे जो भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे. इस एरिया के आसपास में कौन कौन से रिवर्स हैं, कौन से बर्ड सेंचुरीज है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेशनल पार्क्स हैं, ये सारे को आपको इंटीग्रेट करके देखनी है सो दैट यू कैन ईजिली एबल टू आंसर द क्वेश्चंस. Now Hazo happens to be the center of attraction for the Buddhist. मेघालय में Manglongong, these are the important place in Meghalaya. Beautiful village inhabited by the Khasi tribe that has earned a fame of being the cleanest city in the world. It is also known as God's own garden. और ये cleanest city में भी इसको count किया गया. This initiative towards community-based ecosystem, and plastic, polythene, and smoking are strictly prohibited in this area. Now, each household practice the rainwater harvesting in the region. Arunachal Pradesh ki Zero Valley, it's about 110 kilometers from Itanagar. It's a popular destination in Arunachal Pradesh. It is situated on the bank of Pengi River. Zero is a musical valley comprises of several ancient like Hong, Hari, Hija, Bula, Baro, and Siro. So Zero Valley is a several home Himalayan. It's a bird species nesting in all pine trees. और यहाँ पे बर्ड वॉचर के लिए इसको बर्ड वॉचर पैराडाइज बोला जाता है. अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट. And Zero has been figured in the India tentative list for the UNESCO World Heritage Site. It has not yet been confirmed. It has been in the tentative list. Now, Manipur ki Andhra is located about 25 kilometers from Imphal. It's a beautiful foothills in the Nong Mangchi Hill. It's Manipur first letter that derived from the Handro, meaning village, and people who come back. So the village belong to the Loi community. ये community के बारे में भी आपको ध्यान रखना है. कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं community से. And local residents are excellent potters of their pottery products and attract the worldwide attentions. Now, Nagaland में Konoma. Konoma is a Nagaland most holistic village that is located in Kohima. This region is inhabited by Angami tribe, which is 18 tribe of the hill station. Konoma is 400 old village, 400 साल पुरानी है. That has a scenic view. And this was like explored during the British era. Another interesting feature of
Honoma is Karu, the traditional gates leading to local inhabit by the different Khi or clans. Now, Mizoram mein Tenjiwol is located in 90 km away from Aizawl, that is the capital of Mizoram. The Tropic of Cancer run through the picturesque village. That is important tradition. Basically, यहाँ पे जो मिजोरम की हैंडलूम्स है वो इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा यहाँ फ्लरिश की है. The drive on the winding mountain, Road Tenziwal, is amazing, providing spectacular cloud floating below the rolling green hills. Tenziwal is also several sites, that is a well national park and waterfall, and it has a deer park which is called Mini Zoo, and the only park in the state which is particularly conserve the endangered sambar deer. So this is again an important point. You can take a note of this. Tripura, Matabri. This is again a Tripura Sundari temple, which is 55 kilometers from Agartala, the capital. And this temple is the 51 holy Sakti Peeth, shrines of the Sakti, that is as per the Hindu mythology. And this temple is Tripura fell right foot of the Mata Sati. So this is the mythological truth, or you can say the belief that is being practiced over the years. Now, some article that is relevant for General Studies paper 3, like tourism infrastructure development. बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, इट इज़ नॉट द इंजन बट ऑल्सो द व्हील्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगी तो टूरिज्म को प्रमोट कर पाना काफ़ी मुश्किल भी होगा. टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ वाइटल बेसिस फॉर टूरिज्म डेवलपमेंट. जो UNWTO ने, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टिमेट किया दैट इंटरनेशनली देयर वर ऑलमोस्ट 25 मिलियन टूरिस्ट अराइवल इन 1950, जो बढ़ के 1.4 बिलियन तक गई है, और आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा इंक्रीज होगी. टूरिज्म इंडिकेशंस ऑफ इंडिया इन 2019 प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए टू डेवलप टूरिज्म इन इंडिया, एंड ही हैज सेड दैट एट लीस्ट people should be traveling to 15 tourist destinations within 2022. This is what the Prime Minister has said, and he advocated. उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उन्होंने नवंबर में देखो अपना देश प्रोग्राम को स्टार्ट किया था. सो इन रिस्पॉन्स टू पेंडेमिक इकोनॉमिक पैकेज वाज अनाउंस्ड, जहाँ पे गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत या फिर सेल्फ रिलायंस इंडिया मिशन के थ्रू कुछ कंपनसेशन अमाउंट भी दिए हैं टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए. The concept of Atmanirbhar Bharat in the context of tourism can be interpreted to attempt enhance domestic tourism in our country, and Atmanirbhar Bharat aims to find way where this could outbound the motivative, where India is looking forward to prioritize the tourism and even to find the destination that is helping for the अगर आप tourism में करते हैं कहीं ना कहीं उसकी जो contribution है वो economy में ही हो रही है. So for domestic also government has promoted that जो यहाँ के लोग हैं वो भी कोई ना कोई destinations को discover करें. Now tourism infrastructure development की अगर बात करें, कुछ important points highlight किए गए, we'll see one by one. So first is road transport infrastructure initiative. एक बहुत ही important initiative है जहाँ पे national highway, state highway, road, villages road, border road और expressway बनाई गई है. India has the lowest density of express world. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के थ्रू सारी चीज़ें की गई, and even all weather road connectivity is a main aim of this scheme. भारतमाला, जहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च की गई 2015 में, अंडरटेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे. वाटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंडिया इज अ लैंड ऑफ रिवर, जहाँ पे कोस्ट लाइन की अगर बात करें, इट इज अमाउंट 7500 किलोमीटर्स. दिस पॉइंट यू हैव टू टेक अ नोट, एंड इट हैज मोर देन 15,000 किलोमीटर ऑफ नेविगेबल वाटरवेज. सागरमाला प्रोजेक्ट ने 2015 में लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने, दैट इज हेल्प हाई क्वालिटी रोड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कोस्टल सीज एंड द एडजॉइनिंग पोर्ट्स, जहाँ पे कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स और इनलेट वाटरवेज बनाए गए. दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो बूस्ट द एक्सपोर्ट एंड एम्प्लॉयमेंट. नेशनल हाईवे आर एन इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर बोथ पैसेंजर्स एंड द कार्गो. नेशनल हाईवे 2016 एक्ट की अगर बात करें, दिस हैज इनैक्टेड टू रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ इनलेट वाटर एट द हाई इकोनॉमी एंड द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. नाउ एयर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स भी लिया है गवर्नमेंट ने उड़े देश के आम नागरिक के थ्रू रीजनल कनेक्टिविटी प्रमोट की. इन 2016 दे हैव स्टार्टेड, और एक इकोनॉमिकल रेट पे हर एक लोगों को जो एयर फेयर है, खास करके जो एयर फ्लाइट है या जो फ्लाइट के अफोर्डेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इस तरह की स्कीम्स लाई गई. द स्कीम एनविसाज्ड प्रायर कनेक्टिंग टू द अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट इन द कंट्री विद द रिवाइवल ऑफ द existing airstrip in the airport. Udan 4.1 focuses on connecting the small airport along with the special helicopter and seaplane routes. मल्टीमोडल कनेक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, जहाँ पे गति शक्ति के थ्रू नेशनल मास्टर प्लान बनाई गई है फॉर मल्टीमोडल कनेक्टिविटी. गति शक्ति इज अ नेशनल मास्टर प्लान एम्ड एट कोऑर्डिनेटिंग
planning, execution, infrastructure, and reduction of logistic cost. Gati Shakti is a digital platform that will bring 16 ministries and departments together, and it is 100 lakh crore project developing a holistic infrastructure. जो existing infrastructure system है that incorporates Sagarmala, Bharatmala, Udan scheme in the inland waterways. Now, reviving tourism post COVID-19 pandemic. This is again very important. We have seen almost the sectors are reviving, they're on the revival mode, but we have to also ensure that tourism is getting a boost in our country. So, the outbreak of COVID 19 has posed a critical healthcare challenge to the worldwide. The pandemic is one of the most highly contagious outbreak in the recent history. And as the world faces the global emergency in March 2020, the travel and tourism industries come to a halt. ये एक ऐसी इंडस्ट्रीज थी हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म जिसको सबसे ज़्यादा कोविड-19 में इम्पैक्ट हुआ. A deep decline in the international travel led to the loss of around 1.3 trillion of the export revenues and more than 11 times of the loss during the last economic crisis. अब कोविड इम्पैक्ट की अगर बात करें, कोविड की क्या इम्पैक्ट हुई टूरिज्म में. अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, फॉरेन टूरिस्ट अराइवल काफ़ी ज़्यादा कम हो गई, ऑलमोस्ट 66% लोअर रिपोर्ट की गई है. एंड travel and tourism has historically been significantly contributing to almost 10.3% to the global economy. This is again an important point to note. And India alone has estimated that around the world 40 million direct and indirect job in terms of the field of specifically for the travel and tourism were impacted, with a loss of sectoral estimate to be around 16.7 billion US dollar. Now, respond एक approach लगाई गई गवर्नमेंट की तरफ से. यहाँ पे एक स्टडी एक्चुअल की गई, दैट स्टडी बाय पांडे नेटाल. दे हैव रिकमेंडेड अ रिस्पॉन्ड अप्रोच. एक्रोनिम इज रीस्टार्ट ट्रैवल, एस्टैब्लिश प्रोटोकॉल, स्टिमुलेटेड डिमांड, प्रमोटेड ऑर्गेनाइजेशन एंड न्यू नॉर्मल, नर्चिंग द न्यू ऑपरेशनल, डेवलप डिजिटल सॉल्यूशन. दिस इज अ कंप्लीट फुल फॉर्म ऑफ दिस. इफ यू राइटिंग इन मेंस पेपर, आप इस तरह के रिस्पॉन्ड अप्रोच को भी हाईलाइट कर सकते हैं. यहाँ पे इस अप्रोच के थ्रू कोशिश की गई टू कॉम्बैट एंड मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक and take concrete step towards the sustainable recovery. Now, several studies have been proposed to charter the sustainable tourism post-pandemic, and it lists the measure their social distancing, travel, entry restriction, use of personal protection equipments, safety measure, overall जो medical और health situations हैं उसको कैसे improve की जा सके, tourism behavior में क्या क्या changes आई हैं, किस तरह से जो technologies हैं उनको incorporate की जा सकती है ताकि वापस से tourism को fetch किया जा सके. Now, कुछ important takeaways हैं. Basically, first is to understand the new market trend. That is important under this approach. Second is to build safe, resilient, inclusive tourism on the basis of prevailing consumer sentiment. Rethink tourism as a leverage interest in areas such as ecotourism भी promote करने की जरूरत है. India is again a good destination to promote ecotourism. Fourth is a focus on domestic and international tourism. Now, कुछ government के initiatives, like the union government has introduced new initiative to progress and revitalize tourism industries. The union budget has allocated 24,000 crore rupees and 18.42% higher than the allocation was made in the previous. तो revival के लिए गवर्नमेंट ने अपने पूरे बजट allocations में 18.42% तक की इंक्रीज की. And emergency line of credit was extended for March COVID affected sectors में ताकि वो फिर से revive हो सकें, specifically the tourism sector that has created a new job. Now, the government is also gearing up to welcome the tourist in India. That was recently announced by the visa would be given free to 5 lakh tourists. Additionally, ministry ने extend किया है e-visa के facilities को ताकि traveler आ सके 156 countries से. Prime Minister has called for vocal for local and Atmanirbhar Bharat initiative that is effective in promoting the domestic tourism in the local economy. Now, the tourism related and Ayush wellness की अगर बात करें, India is again a प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर मेडिकल टूरिज्म. तो यहाँ पे आयुष और वेलनेस को भी गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा प्रमोट की. बजट के एलोकेशंस में आयुष और वेलनेस पे काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट ने फोकस किया है. वेल पेंडेमिक हैज़ विजिबल द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द टूरिज्म, इट इज़ नाउ ओपन द पॉसिबिलिटी टू नीच द टूरिज्म एंड आयुष वेलनेस. द पेंडेमिक हैज़ इंक्रीज्ड अवेयरनेस अबाउट होलिस्टिक वेलबींग एंड बिल्ड मल्टी कॉम्प्लीमेंट क्यूरेटिव दैट इज further facilitating the global position of Ayush system. Now, Indian Travel and Startup has utilized opportunity to promote travel wellness, which has gained popularity among the last years. Ayush is also an important part of Heal India campaign for promoting medical value tourism in our country. Right. So this was all about for the Kurukshetra compilation. We have a lot more other initiatives for you, like daily news and editorial analysis. जहाँ मैं आपके साथ
हिंदू और एडिटोरियल के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल्स हैं, एक्सप्लेन पेजेस हैं, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट के जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो डिस्कस करता हूँ डेली बेसिस पे. यू कैन डाउनलोड आर आई एस गेस्टेड मैगजीन फ्रॉम वेबसाइट. एफ सी है, पी आई बी, एम पी आर विच विल बी अपलोडेड वेरी सून. जस्ट ऑफ योजना और कुरुक्षेत्र दोनों अपलोड हो चुकी है. आप इसको देख सकते हैं और पूरे अपने प्रिपरेशन के दौरान में इसका हेल्प ले सकते हैं. So this all initiative will help you to sail through the journey of civil services. If you have any other concern, you can let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching this video.